राहुल, जैसे आपने पहले भी कहा कि बहुत स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन यहाँ से रहेगा मार्केट्स में, तो ये स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जहां पर ऑन डिप्स बाय करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा था, मुझे लगता है कि फार्मा स्पेस में इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज कर रहे हैं। लार्ज कैप में मैंने कहा था कि हमारे ब्रोकरेज हाउस पे हम सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज़ और औरबिंदो पे काफ़ी पॉजिटिव हैं। मैंने मल्टीप्लेक्सेस थीम की बात की जहाँ पे हमें आइनॉक्स और पीवीआर पे थोड़ा पॉजिटिव टिल्ट है। कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के प्रति हमारा थोड़ा पॉजिटिव टिल्ट रहा है, नेम्स लाइक वी गार्ड फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे ऐसे कुछ नाम हैं। Gold finance is another space that we are fairly positive on, names like Muthoot and Manappuram. So there are certain opportunities I think that are there at an aggregate level in the market, even in the mid-cap space, names like Bata, CCL. So enough opportunities हैं. You don't have to chase momentum 20, 30, 40% higher just because you missed out in this rally. I think broader market में काफ़ी अच्छे companies हैं governance के हिसाब से, जहाँ पे आपको reasonable growth मिल सकती है और valuation ज़्यादा stretch नहीं है। वहाँ पे आप अपना ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो I think there is a case to be made for making some money. But like I said, don't chase momentum. Don't go out and buy anything which is at a 52-week high today just because you have missed out and you are getting that left out feeling. That would be a dangerous strategy at this point. ऑलराइट मनीष, चलिए आपसे आखिरी सवाल होगा। जैसा आपने कहा कि इवेंचुअली जो अर्निंग्स हैं और फ्लोज है वो मैटर करेंगे, लेकिन प्राइमरी मार्केट में हमने देखा है अच्छा खासा मोमेंटम है और इस बार इश्यूज भी ठीक वैल्यूएशन पर आ रहे हैं। जैसा टिपिकली फ्रॉथी मार्केट में देखने को मिलता है वैसा एटलीस्ट अभी तक तो नहीं हुआ है मार्केट में। आपका व्यू क्या है प्राइमरी मार्केट पर? नहीं, इश्यूज अच्छे आ रहे हैं। अगेन इट इज़ अ फंक्शन ऑफ फ्लोज। अब डी मार्ट के इशू में अगर 2 लाख करोड़ रुपये आ जाता है तो ना तो किसी को कुछ शेयर्स मिलेंगे और जिनको शेयर्स मिले उनकी तो लॉटरी लग गई। बट अगर आपको सेकेंडरी मार्केट से वही शेयर्स खरीदने हैं, क्योंकि आपको एक पोर्टफोलियो चलाना है और अगर आप 2% या 3% भी एलोकेशन उस नाम में लेते हैं तो मतलब प्राइस इम्पैक्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। आपकी जो वैल्यूएशन है जिस पर आप वो बाई कर रहे हैं कंपनीज, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरली हाई होंगे। वहाँ से रिटर्न बनाना बहुत कुछ संभव नहीं होगा। तो जो एंकर इन्वेस्टर्स को जिनको शेयर्स मिल गए उनके लिए बहुत अच्छा है। पर अगर बाज़ार से शेयर लेने हैं, क्योंकि आपको एक पोर्टफोलियो में एक एलोकेशन क्रिएट करना है, तो बहुत फ्रॉथी वैल्यूएशन में सब इश्यूज आ रहे हैं और लिस्टिंग के बाद और भी फ्रॉथी हो जाते हैं। तो इट इज़ अ गुड साइन कि गुड कंपनीज आ रहे हैं इश्यूज में, बट रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मिल पा रहे हैं। जी, चलिए, शुक्रिया मनीष और राहुल आप दोनों का शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज इक्विटी मार्केट्स पर शेयर करने के लिए। ऑल्सो एंड्रयू, व्हाट्स योर व्यू रिगार्डिंग FIs flows towards Indian market? Do you think foreign investors, those who were sitting on the fences, may now relook towards their Indian investment strategy? I certainly think they'll feel more secure in the Indian strategy going forward. But I think when we look at global growth, and we're more optimistic about global growth now, that I think foreign investors' initial and continued kind of exposure will be more towards those countries in the emerging markets, which are big beneficiaries of global growth. So that the likes of South Korea or Taiwan would probably see more flows from emerging market funds in India. You'll get fund flows to India, that's for sure, but I'm not sure we're going to see an overweight position on India compared to other emerging markets where valuations are much more compelling and the growth factors could be a lot quicker in terms of GDP growth from the lower levels that they are at the moment. So I expect India will get flows, but I don't think it will be a bonanza, that's for sure. Right. Also, Andrew, there are certain challenges before the government right now, be it the resolution of bad loan mess in the banking sector, be it the labor law reforms, or be it the creation of job. But from economy, from market, or from corporate perspective, what should be the immediate strategy regarding reforms of the current government? Well, obviously we have GST to be implemented, which will they've talked about July the 1st, and that's a big reform key, and over the longer term is going to be great for industry. And I think if we can get through the hiccups of maybe the first 3 months, I think that would give corporates the confidence then to start investing. So I think we could start to see corporate capex pick up towards the back end of
2017 into 2018. Unfortunately, the problems with the bad loans is forcing banks to be a lot more cautious, particularly the PSU banks. So until that we can start to see through that that problem, then it's going to be difficult for corporates to get excited about.